Now we are going to calculate for C2. That will comes out to be 1 divided by R e की power j theta divided by R e की power j theta plus 2 limit R tends to infinity. What does that mean? लिमिट इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, आर की थीटा वेरी कर रहा है प्लस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 की ओर। इस टर्म को देखते हैं, आर इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। इस आर के कंपैरिजन में ये 2 काफी छोटा है। इट मींस इस आर के कंपैरिजन में हम इस 2 को नेगलेक्ट कर सकते हैं। R is a very big quantity as compared to 2, so we will neglect 2. These terms come out to be 1 by R square e की power j2 theta limit R tends to infinity. First of all, we will calculate its magnitude, then its phase. Magnitude of exponential is 1, so its magnitude will come out to be 0. अब बात करते हैं इसके फेज की। इस फेज will be e to the power minus j2 theta divided by r square, that comes out to be minus 2 theta. थीटा कहाँ से कहाँ जाएगा? प्लस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2। तो इस ट्रांसफर फंक्शन का फेज इस रेंज के लिए कहाँ से कहाँ जाएगा? माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 दिस माइनस, that comes out to be minus पाई 2 प्लस पाई। मतलब C1 के लिए हमने ड्रॉ किया, C2 के लिए किया। नाउ वी हैव टू डू कैलकुलेशन फॉर C3 एंड देन फॉर C4। सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस, लेकिन इसको इरेज करने से पहले इसका प्लॉट ड्रॉ करते हैं। दिस इज माय QS प्लेन। At omega 0, magnitude is infinity, phase is minus 90. जैसे जैसे ओमेगा बढ़ रहा है, as omega is increasing, magnitude is decreasing and phase is going from minus 90 to minus 180. So for C1, graph will be somewhat like this. Now for C2, magnitude is 0 and phase is changing from minus pi to plus pi. At this point, magnitude is 0 and phase changes from minus pi to plus pi. Now we will do calculation for C3 and then for C4. See, this was for omega equal to 0. This was for omega equal to omega approaching infinity. For C3, S approaches to minus j omega. And omega changes from infinity to 0. What is this one? Z at minus j omega, H at minus j omega. 1 divided by minus j omega
minus j omega plus rho. It's magnitude 1 by omega into omega square plus 4 of phase minus of tangent inverse omega by 0 minus of tangent inverse omega by 2. ये माइनस नीचे के कारण दिस माइनस एज दिस पॉइंट कम्स आउट टू बी फोर्थ क्वाड्रेंट. ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए कैलकुलेट करेंगे. ओमेगा एंड मैग्नीट्यूड एंड फेज. Omega goes from infinity to 0. Omega goes from infinity to 0. At infinity, 1 by infinity into infinity square plus 4. This term is very small as compared to this neglected 1 by infinity square. Magnitude will be 0. Phase of this is already 90. Plus 90 at omega infinity, tangent inverse infinity is minus 90, minus plus 90, it comes out to be plus 180. At omega 0, this is 1 by 0 into something 0, it is equal to infinity. Phase plus 90, 0, 0. Comes out to be plus 90. So we will go from here. At infinity magnitude is 0 plus 180. This point. Then जैसे जैसे ओमेगा घट रहा है from infinity to 0, magnitude is increasing and phase is changing from plus 180 to plus 90. So phase is changing from plus 180 to as omega goes from infinity to 0. Omega goes from infinity to 0. Now for C4. Now for C4, that was limit r tends to 0, r e to the power j theta, where theta was going from minus pi by 2 to plus pi by 2. This आता. So that will come out to be 1 divided by r e raised to the power j theta divided by r e raised to the power j theta plus 2. Limit r tends to the 0. अब r 0 को अप्रोच कर रहा है. This term is very small as compared to this. So हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे इसके कंपैरिजन में. That comes out to be 1 divided by r e की power j theta into 2. Now r is 0. 1 by 0. So its magnitude comes out to be infinity. Now, अब बारी
गया कि फेज कितना टर्म्स का फेज, इसका फेज कितना होगा, दिस इज कांस्टेंट, फेज आएगा इसकी वैल्यू e की पावर माइनस j थीटा डिवाइड बाय 2r, सो इट्स फेज विल बी माइनस थीटा, थीटा इज गोइंग फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, माइनस फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, सो जो फेज निकल के आएगा दैट विल बी प्लस पाई बाय 2 से टू माइनस पाई बाय 2. So for C4, magnitude is infinity and phase is changing from plus pi by 2 to minus pi by 2. Phase is changing from plus pi by 2 to minus pi by 2. This will be its Nyquist plot या Nyquist contour. अब तुम्हारे गेट के एग्जाम में तुम्हें इस टाइप का एक नाइक्विस्ट प्लॉट दिया होगा, इस टाइप का एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा, एंड यू हैव टू टेल whether the closed loop system made from this open loop system will be stable or not. तुम्हें बताना होगा कि इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से जो हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे वो स्टेबल होगा कि नहीं, अगर ये नाइक्विस्ट कॉन्टूर गिवन है तो then you will use the equation n is equal to p minus z, minus 1 comma 0 lies here. Does this Nyquist plot encircle this minus 1 comma 0? Answer is no, it does not. So value of n will be 0. P, number of poles in the right hand side in open loop transfer function. There is no pole in the right hand side of imaginary axis. So value of P comes out to be 0. So Z comes out to be 0. Means system is stable. Which system? Closed loop transfer function. The closed loop transfer function which we are going to make from this open loop transfer function is stable. चेक करते हैं, इस ट्रांसफर फंक्शन से मैं क्लोज लूप सिस्टम बनाता हूँ विद यूनिटी फीडबैक, दैट विल कम आउट टू बी 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 2, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय s इनटू s प्लस 2, 1 डिवाइडेड बाय s इनटू s प्लस 2 प्लस 1, 1 divided by s के plus 2s plus 1. इसकी जो रूट्स आएंगे they will lie on the left hand side of the imaginary axis. So the system which is closed loop system is stable. जो चीज़ हमने नाइक्विस्ट प्लॉट से कैलकुलेट की थी वही चीज़ हमें लोकेशन ऑफ पोल से भी मिल गई. मीन्स हम नाइक्विस्ट प्लॉट का यूज कर सकते हैं किसी भी क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी बताने के लिए विदाउट फाइंडिंग इट्स ट्रांसफर फंक्शन. वी जस्ट वांट टू नो कि whether a closed loop system which is formed using this open loop system will be stable or not. Then we don't
have any need to find out the transfer function of closed loop system. मुझे बताना है कि जो इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बनेगा वो स्टेबल होगा कि नहीं, whether that transfer function, whether that system will be stable or not. तो हमें क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को निकालने की जरूरत नहीं है, हम इस इक्वेशन का यूज करके और नाइक्विस्ट प्लॉट को देख करके ही बता सकते हैं कि whether our system will be stable or not. अब कोई अनस्टेबल एग्जांपल लेते हैं, जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमारा अनस्टेबल हो, the same procedure you will follow to find out the Nyquist plot. Then you are going to calculate that whether the closed loop system is going to be stable or not. से मेरा ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया. Here my open loop system is unstable. Without finding closed loop transfer function, I am going to see whether my closed loop system will be stable or not. मतलब मैं मेरा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन अनस्टेबल है, नाइक्विस्ट प्लॉट का यूज करके मैं फाइंड आउट करूंगा कि मेरा क्लोज्ड लूप सिस्टम बनेगा दैट विल बी स्टेबल और नॉट. यू विल फॉलो द सेम प्रोसेस. फर्स्ट यू आर गोइंग टू कैलकुलेट C1, C2, C3, C4, then the magnitude phase and then you will draw its Nyquist plot. मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूँ कि स्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो इसका नाइक्विस्ट प्लॉट जो बनेगा that will be somewhat like this. This points comes out to be -1,0. Here -1,0 is encircled single line. Which direction? Clockwise direction. -1,0 is encircled single time in this direction and is equal to P minus Z. N is -1. Clockwise minus number of poles in open loop transfer function in right hand side 1 minus Z. Z comes out to be 2. So unstable. Now we are going to check the same thing using finding out the transfer function so that we can confirm what we understand that is right or not. मैं इसकी वेरिफिकेशन करवाऊंगा क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन निकाल के, ताकि तुम्हें पता लगे जो चीज़ हमने समझी है वो ठीक है कि नहीं. इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगा? 1 divided by s minus 2 over 1 plus 1 divided by x into s minus 2. Here I am finding closed loop transfer function. 1 s into s minus 2 plus 1. The poles of this root, of this transfer function, मतलब इसके जो roots आएंगे, they will lie in the right hand side of the transfer function as negative terms comes there. इसके जो roots आएंगे वो right hand side में होंगे. क्या roots होंगे? 1 divided by s minus 1 s minus 1. इसके रूट्स आएंगे, लोकेशन ऑफ पोल विल बी
एट 1 एंड 1। मतलब इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का यूज करके जो मैं क्लोज लूप बनाऊंगा, दैट क्लोज लूप विल ऑल्सो बी अनस्टेबल। वो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन भी अनस्टेबल होगा। ये चीज हमने यहाँ से भी कैलकुलेट करी थी। सेम थिंग वी आर गेटिंग हियर, वैल्यू ऑफ z इज 2। इसने बताया कितने नंबर ऑफ पोल्स होंगे राइट हैंड साइड में, दैट इज 2। दोनों पोल एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। sp इज माइनस, sp इज 1 and 1, so